गोवा से हम लोग वापस आ रहे थे ऑन द वे टू बेलगाम. हम्म, We had those, those bikers, हाँ जी. racing bikers. Yeah, ji. One bike, one boy and a girl. They were sitting on a bike, and on the turn they just got skipped. All were doctors. So we stopped there, and I did the same thing. I just got some branches from The surrounding, trees, whatever was surrounding available. whatever I could get, and I got the dupatta of that girl Girl, and tied it. herself, and I tied it. That was a femur fracture, Acha. and I called up in KLE Hospital. In KLE Hospital, we sent the patient by ambulance. The damage or the trauma that happens at the site due to the collision or the accident, and the damage which is caused while shifting the patient from that site to the hospital. Most of the times, that trauma gets worsened during transport. So she apparently had a normal, I think her just sugar levels went down and she fainted. At the time of shifting her, I don't know what happened. There was some pull. वो जो बेहोश हो गई थी. That reason was cured within next couple of hours. And the shoulder took got a back. And she was taking physio. Say spine trauma, cervical spine trauma or lumbar spine trauma. The patient needs to be handled. मतलब आप जो अभी गणेश मंडल वगैरह रहते हैं या हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो रहते हैं, जो those drivers and all, those who get exposed to the trauma patient at primary level. Yeah. I try to teach them also. I try to take workshops, so they should be aware how to stabilize the patient and what to be looked in. One moment, it's just an ordinary day. And the next, there is an ambulance, multiple injuries, and a life hanging in the balance. Polytrauma isn't just about complex surgeries, it's about urgency, uncertainty, and the human body pushed to its limit. In this episode, we step into the reality of trauma care, where decisions are made under pressure, surgeries are staged strategically, and survival often depends on what happens in the first few critical minutes. These are the stories that leave a mark on both the patients and the teams who fight to save them. Joining us today, we have Dr. Shivkumar Rajmane, a distinguished orthopedic surgeon with over 2 decades of clinical excellence and more than 7,000 plus surgeries performed. Renowned for his expertise in trauma management and joint replacement, he currently leads the orthopedic care at Sahyadri Super Specialty Hospital, Kadad. Dr. Rajmane has trained and practiced at some of India's most prestigious institutions, and his contributions as a researcher and published author continue to advance the field of orthopedic surgery. Hello and welcome to another episode of Sahyadri Health Talks. I'm Dr. Tushita, and today we have with us Dr. Shivkumar Rajmane, the face of Orthopedic and Trauma Center of Sahyadri Hospital. Sir, how are you? I'm fine. How does about it you? feel? I'm good. Thank you so much. And how does it feel to be on this podcast? Welcome on this Feeling podcast. nice. first of all. Feeling nice. So we were really excited to have you on this podcast because what interests me more towards it is being an orthopedic. You had so many other options or ways out of doing your super specialization. But what drew you towards this polytrauma, and what's the story behind this? See, basically, polytrauma is most of the cases in small hospitals, small setups. It's non-handled properly, not handled properly rather. Acha. And they don't have those expertise Uh-huh. in small setups. Uh-huh. Being a tertiary care center, we have to do it day in and day out. Uh-huh. And basically, most of the orthopedic surgeons or general surgeons also don't know how to manage a polytrauma if they are working in a small setup. Okay. So this is a case which can be or which should be managed in a tertiary care hospital only. So most of the outside hospitals or small setups or even your primary health centers or rural hospitals, they just tend to make the patient get shifted to the tertiary hospital.
It's like that. Mm-hmm. And so that is, at least they should try and examine the patient first, try and look at the patient at least once, and try to do something or other Okay. at their level Stabilizing for basically. those 30-40 minutes to be the patient alive or to control the damage at the origin site. Mm-hmm. That's why I'm also doing some activities, like I'm training your young Budding generation, doctors. young generations. अच्छा. No, not budding doctors. अच्छा, non-doctors, यंग non-medicals. जनरेशंस, मतलब आप जो अभी गणेश मंडल वगैरह रहते हैं, हम्म. या हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो रहते हैं, जो 3 व्हीलर्स रहते हैं या 4 व्हीलर्स रहते हैं, like your Ola taxi cab, हाँ जी. the different what up services there in our zone. So those drivers and all, those who get exposed to the trauma patient at primary level, Yeah. I try to teach them also. I try to take workshops for them Oh, also that's wonderful. at those sites, at their Achha. sites. Because they are the So, first point of contact during exactly, these exactly. So situations. they should be aware how to stabilize the patient and what to be looked in. Second thing is, अगर ब्लीडिंग है क्या है, तो ब्लीडिंग वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. कम से कम उसके ऊपर जो भी कपड़ा मिले वो टाइट बांध दे. अगर मैंगल्ड एक्सट्रीमिटी है, जैसे कि फ्रैक्चर है, बहुत खराब फ्रैक्चर है, पैर उल्टा सीधा हो गया है, तो उसको टेम्पररी सपोर्ट दे. आप कैसे भी दे सकते हो. सब समझो आपके बाजू में अगर कोई पौधा है, उसका आप ब्रांचेस तोड़ के उसको सीधा लगा के उसको बांध के भी बेच सकते हो. एंड दिस आई हैव डन इन माय पर्सनल लाइफ वंस व्हाइल I was coming back from Goa river marathon. अच्छा. I did that river marathon, और गोवा से हम लोग वापस आ रहे थे. On the way to Belgaum, we had those those bikers, हाँ जी. racing bikers. Yeah जी. So 1, 2, 3, 10, 12 And they bikes go in crossed. this troops, हाँ, huge the troops. 10, 12 bikes crossed, and after that one bike, one boy and a girl, they were sitting on a bike, and on the turn they just got skid, and we stopped there being doctors, because most of my friends were there and all were doctors. So we stopped there and I did the same thing. I just got some branches from The surrounding, trees whatever was surrounding, available. whatever I could get, and I got the dupatta of that Girl, and tied it. herself, and I tied it. That was a femur fracture. Acha. And I called up in KLE hospital. In KLE hospital, we sent the patient by ambulance. So it is basically before the ambulance arrives, what needs to be those done. things, yes, exactly. Or even during the transport or while shifting the patient to the ambulance, some things to be done. Like if you are having, say, spine trauma, cervical spine trauma, or lumbar spine trauma, the patient needs to be handled in a certain way. Actually, in a careful way. Precisely, I was just about to say this, that in a case, in most of the cases of RTAs, the damage or the trauma that happens at the site due to the collision or the accident, and the damage which is caused while shifting the patient from that site to the hospital, there are a lot of other most things. Of the times, I'll tell you, most of the times that trauma gets worsened during transport. True. So I was telling my talking to one friend of mine, colleague of mine. So she apparently had a normal, I think her just sugar levels went down, and she fainted while she was in the hospital setup. So she fainted immediately. She was taken and stabilized, and she was fine. But because at the time of shifting her, I don't know what happened. There was some pull. वो जो बेहोश हो गई थी. That reason was cured within next couple of hours. And the shoulder took an impact, and she was taking physiotherapy for next 6 months. Shoulder got dislocated. So this is in one of the previous setup where I used to work. This was that. So the shifting trauma, the shifting pattern, I would say, was so bad that उसको जो हुआ था, the primary cause was treated, and for the shoulder she had to take 6 months of physiotherapy. So not everyone is trained in that way. Yeah. That's why I like to present this topic. Even I have given lectures
on the same topic, अच्छा, polytrauma and management at the site of the accident, हाँ जी, whether it is RTA or it is industrial accident, हम्म, हाउ टू मैनेज इट प्राइमरीली. हम्म, मैंने इसके लेक्चर्स इवन कॉलेजेस में लिए. इवन हमारे करड़ का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कॉलेज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज है, हम्म, सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज, दैट इज एचजीएम कॉलेज. हम्म, तो वहाँ पे भी मैंने एक उनका लेक्चर लिया oh था. lovely, इवन okay, आई हैव गॉट दोस पावर पॉइंट्स एंड ऑल, एंड आई डू ट्राई टू टीच देम how to manage the injury primarily at the site of accident. at the side of Once the patient reaches casualty, then the game is all different. yeah, because there are experts there. Do you have experts, and they will take care Take of care it. of it. But primarily, that damage should not get worsened. हाँ, That is हाँ. what is What people need to know. everyone should get. Everyone should know, be it medical or non-medical. Yes. So this polytrauma cases, so as the word suggests, like polytrauma, matlab multiple traumas happening at the patient. How is it different from an isolated trauma? And how is the treatment approach different from an isolated trauma? Okay. You called upon two terms. One Acha. is polytrauma, and the Polytrauma. other term is isolated. Isolated trauma. When you think about polytrauma and isolated trauma, वो जो दो वर्ड्स है, वो जो दो लफ्ज है, वही सब स्टोरी बता देते हैं. आइसोलेटेड का मतलब है आपको कोई एक जगह पे, कोई तो एक लिम्ब पे या कोई स्पाइन पे या कोई एब्डोमेन पे, वो एक जगह पे आपको ट्रॉमा हुआ है, एंड दैट्स ऑल. रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नॉर्मल. एंड पॉलीट्रॉमा मतलब क्या है कि आपका मल्टीपल सिस्टम्स गेट इंजर्ड. तो मतलब आपको एक The जगह complications will be higher. तो एक पैर में फ्रैक्चर है, दूसरा एब्डोमेन में कहीं तो ब्लीडिंग हुआ है, चेस्ट में कहीं तो ब्लीडिंग हुआ है, और साइमल्टेनियसली हेड इंजरी हुआ है, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो गया है, ऐसा कुछ तो है. सो 2-3 systems are getting involved. Means neurosurgery, general surgery, and orthopedics. All 3 branches are getting involved. So this is called as. So we are actually talking about a large team working on a polytrauma case, Definitely, right? definitely. So how does this approach, or this typical pattern of polytrauma makes it difficult to work during the golden hours once the patient has reported to ER? So how is the first hour approach? See, polytrauma का जो मैनेजमेंट है, उसमें ABCD करके जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो वर्ल्ड वाइड सेम है. उसमें कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है. ओनली थिंग इज फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स इज डिफरेंट. अच्छा. हर जगह का पैटर्न फॉलो करने का जो पैटर्न है वो अलग है. सो ABCD, you will ask me what is ABC. ABC is airway. So first you have to look after the airway. If see the entire मतलब कहीं तो कीचड़ में कोई फंसा है, समझो, लैंडस्लाइड इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ पॉलीट्रॉमा. तो कीचड़ में कोई फंसा है और उसके नाक में या अपने एयरवेज में कुछ तो डर्ट जाके बैठा है. पेशेंट को फ्रैक्चर नहीं है, कहीं एब्डोमिनल इंजरी नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो एयरवे ब्लॉक हो गया है और वो निकालने के लिए उसके हाथ भी फंसे, तो ही कैन नॉट रिमूव. तो सिंपलेस्ट पार्ट इज यू हैव टू रिमूव दैट पार्टिकल फ्रॉम द नेजल एयरवे और योर ओरल एयरवे. Otherwise, the inhalation get compromised. Although you inhale from the mouth and all, but it gets compromised. Yes. And that actually creates further problems. So these things you have to manage. Airway, you start with the airway. Second thing is breathing. Whether patient is breathing properly or not. What are the problems? You have to look after the breathing. अगर आपका patient casualty में भी आया है, तो आपको breathing whether both side it is equal or not. Air entry is equal or not. If it is not equal, then you have to find out why it is not equal. So air entry, breathing. Third thing is circulation. तो patient का BP normal है कि नहीं. BP अगर patient का hypotension में है, तो it means there are injuries. अच्छा. One or many injuries. So isolated trauma or polytrauma. Most commonly hypotension में patient अगर land होता है तो polytrauma का केस होता है. अच्छा. मेनी टाइम्स आपको फ्रैक्चर अगर है, समझो आपका थाई बोन टूटा है, तो थाई बोन टूट गया तो नॉर्मली दिख जाता है. या लेग टूटा हुआ है तो दिख जाता है. अगर आपका ह्यूमरस टूटा हुआ है आपको दिख जाता है. पर एब्डोमेन में अगर कुछ इंजुरी है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता. पेल्विस में अगर कुछ इंजुरी है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता. अंदर जो ब्लीडिंग रहता है वो आपको समझ में नहीं आता.
बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द पेशेंट, वॉट एवर विजुअल साइट्स आर देयर। अगर आपका पैर थाई बोन टूटा हुआ है और वो बोन बाहर आ गया है, बाहर आ गया तो उसको आप अंदर डालोगे, उधर का ब्लीडिंग कंट्रोल करने का आप प्रयास करोगे, पर साइमल्टेनियसली पेल्विस में अगर इंजरी है तो दिखता नहीं है, तो पहले आप क्या करो, जितना आपको सामने दिखता है वो ब्लीडिंग तो कंट्रोल करो, वो कंट्रोल करो, मतलब ब्लीडिंग साइट शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट। सेकंड थिंग इज यू हैव टू साइमल्टेनियसली मैनेज हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब क्या है, क्या आपके नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, अगर एक फीमर टूट गया तो उसमें से 1.5 लीटर बह जाता है, एज पर द बुक्स उसमें से 1.5 लीटर बह जाता है। अगर पेल्विस फ्रैक्चर हो गया तो उसमें 2 लीटर बह जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। 5 लीटर में से अगर 2 लीटर ब्लड खून गया, so the volume of the blood volume goes of the down. blood is only 60%. 60%. So the patient is going in hypovolemic Hypovolemic shock. So you have to manage that volume of the blood. You cannot give blood at the next moment to the patient because you don't have cross-matched blood and everything. There's a lot of other At the parameters which comes. lots of formalities to complete. Yeah. You have to get that blood cross-matched and all. Then you have to replace that blood The with lost certain one. fluids. Those fluids are called as crystalloid fluids. अच्छा. तो क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स में क्या है कि आरएल या फिर आपका हिमेसिल, ये चीजें नॉर्मली अगर आप गांव में जाओगे, एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो वो एनएस नॉर्मल सलाइन वगैरह, दोज आर कोलॉइड फ्लूइड्स, दे डोंट हेल्प मच। अच्छा. सो फॉर दैट पर्पस कैजुअलिटी Is in a equipped tertiary with- hospital they are trained enough. Yeah. But for the rural people or for the primary health centers, primary care centers, they have to get trained for that. Which fluid to be transfused? हाँ जी. All those things. I mean, obviously, if there is a blood loss, then and you are supplementing it with NS, it's not going to help. It's not going to help. So you need RL or Hemosil or something like that. So that part, once you take out the patient from hypotension, then you manage the major injuries. Okay. So when it comes to the polytrauma part of it, from an orthopedic point of view, which of the polytrauma cases are really life-threatening? Which cases can be really life-threatening? See, from all orthopedic point of view, it is pelvis fracture, fracture femur. Because I just told you, pelvis fracture will give you 2 liters of blood loss, femur fracture will give you 1.5 liters. So you are saying that, and if you have multiple fractures, but the polytrauma becomes life-threatening eventually because there is excessive blood loss. Blood loss. Most of the times it is blood loss. Because of blood loss. Second thing, most of the times. Second thing, even in abdomen, it will be blood loss. You have to control that bleeding. Correct. In chest, it will be blood loss. You have to control that bleeding. Achha. If there is head injury and that internal blood loss is very severe, then the game is altogether different. You have to go for craniotomy and control the bleeding inside the brain. Hanji. So that is a part. But most commonly in polytrauma, the other blood loss which causes hypovolemic shock is more important. अच्छा. So you are saying तो blood loss कहाँ से हो रहा है वो पहले पता करो, उसको रिप्लेस करते रहो, उसका बीपी। सेकंड थिंग इज क्या होता है कि लोग ईएमएस में ट्रेंड होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कोर्स आया हुआ है, and they are more trained in ICU setups. They are not trained in casualty setups. तो ICU setups में क्या होता है कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट कम रहते हैं, बट वहाँ पे हाइपोटेंशन के पेशेंट्स रहते हैं। उसका रीजन होता है कि कार्डियक कॉज कुछ तो रहता है। और वो लोग क्या होते हैं कि फिर अगर आपको कार्डियक हाइपोटेंशन हो गया है तो उधर वो ट्रेंड होती है कि उसको वासोप्रेसर दे दो। तो वासोप्रेसर से क्या होता है, बीपी ऊपर आ जाता है, हाइपोटेंशन कम हो जाता है। वो लोग, उनके दिमाग में वही रहता है कि बीपी लो है, इसको नॉर्मल करो, वासोप्रेसर दे दो। तो वो क्या करते हैं, वासोप्रेसर इतना दिया और थोड़ा बढ़ाया और थोड़ा बढ़ाया और बीपी ऊपर लाया, बट अंदर का जो हाइपोवॉल्यूम है वो करेक्ट नहीं हुआ ना। सो द रूट कॉज इज नॉट फिक्स्ड, रूट कॉज इज नॉट ट्रीटेड। तो इसी वजह से मैंने ये अब ये सब हुआ क्यों, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि व्हाई पॉलीट्रॉमा टॉपिक। करेक्ट। इसका वन ऑफ द इटियोलॉजीज इज दिस। ओके। बहुत सारे अब जनरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, उनका ट्रेनिंग उसमें रहता है, ईएमएस में रहता है। वो लोग क्या करते हैं, वासोप्रेसर देके
बीपी जैसे तैसे ऊपर लाके भेज देते हैं, Mhm. पर बेसिक कॉज इज नॉट ट्रीटेड. सो दे शुड बी मोर अवेयर ऑफ द etiology ऑफ हाइपोटेंशन इन अ पॉलीट्रोमा पेशेंट. Mhm. ये सब चीजें दुनिया को जितना बताएंगे आप उतना अच्छा है. The better, the awareness about Knowledge, it. Yeah, better yeah. knowledge about it. So, sir, while we were talking the other day, I heard a few terms which you used, which was like early trauma care or early total care, and versus staged surgical approach. Exactly. So, what are these approaches when it comes to polytrauma treatment? I mean, Now I will tell you what is early total care and what is staged approach. Early total care means you are treating the patient in one shot, Acha. in one go. Acha. Now you can do this in, say, head injury, you can do this in abdomen injury. You have to treat that. In one go, you have to treat that. There is no other option. Right? But in trauma, what happens? In orthopedic trauma, what happens? There will be compound injuries. Acha. Grade 3 compound injuries, Okay. grade 2 compound Okay. injuries, grade 3B, grade 3C compound injuries. Okay. ग्रेड 3C मीन्स उसमें आपका न्यूरोवेस्कुलर डैमेज रहता है, वेस्कुलर इंजरी विल बी देयर. तो ऐसे केसेस में इन एडिशन टू दैट देयर इज कंपाउंडिंग, बट पेशेंट गिरा कहाँ पे? अगर वो कीचड़ में गिरा है तो उधर का पूरा मैल मिट्टी अंदर गया हुआ है, सब कुछ अंदर है. कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल एक्सीडेंट रहता है तो उसका जो बॉडी का कलर उड़ता है, आपके बाइक का या कार के बॉडी का कलर जो उड़ता है, वो डेंट पेंट वो भी वो जख्म के अंदर आपको दिखने में आता है. तो इन दोज केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट आपको वो पूरा क्लीनिंग करना है. अच्छा, आपको पूरा क्लीनिंग करना है. अगर वो अंदर रह गया या घुस गया तो आप although you are treating that fracture, it will never get cleared. तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको स्टेज प्रोसीजर करना पड़ता है. सेकंड थिंग, स्टेज प्रोसीजर क्यों करने पड़ते हैं कि डे 1 को जो भी पेशेंट का ट्रॉमा है उसकी वजह से उसका सिस्टेमिक कंडीशन क्या है, वेदर वो पेशेंट उतना नंबर ऑफ सर्जरीज वो सह पाएगा या नहीं पाएगा या नहीं. Is the patient actually stable enough to handle those surgeries? So in those cases you have to manage it temporarily. अच्छा. And then do a stage procedure. अच्छा. अगर आपको वेस्कुलर इंजुरी है, समझो आपका नी डिस्लोकेशन और वेस्कुलर इंजुरी है, तो आई हैव टू रिड्यूस दैट डिस्लोकेशन, आई हैव टू रिपेयर द वेस्कुलर इंजुरी विद इन 6 hours. दैट विल बी देयर. पर अगर उसको उतना कुछ नहीं है और एब्डोमेन का ट्रॉमा है, वो एब्डोमेन का सर्जरी जनरल सर्जन ऊपर कर रहा है और मैं नीचे बेवजह वो फ्रैक्चर बिठाने में बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं है. समझ रहे क्या? तो वो फ्रैक्चर का सर्जरी मैं बाद में कर सकता हूँ. टेम्पररी आई विल जस्ट फिक्स, आई विल ट्राई टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. मतलब क्या है कि अगर फ्रैक्चर के जगह पे मोबिलिटी है तो उससे एम्बोलिज्म बढ़ने के चांसेस है. तो टू अवॉइड दैट एम्बोलिज्म व्हाट कैन आई डू? दैट थिंग आई विल डू इन द डे 1 सर्जिकल प्रोसेस, एंड आई विल जस्ट टेक काम. आई विल क्लीन दोज वुंड्स इफ दे आर. तो वो जख्म पूरा धो के पूरा उसका ड्रेसिंग वेसिंग करके टेम्पररीली स्टेबलाइज, फिर वो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, एक्सटर्नल फिक्सर्स लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. तो वो मैं टेम्पररी करूंगा. उसके बाद में फिर जाके नेक्स्ट स्टेज में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब भी पेशेंट स्टेबल हो जाए, मुझे लगता है कि वो वोंड भी हील हो रहा है अच्छा सा, इन्फेक्शन नहीं है अंदर, सिस्टेमिकली पेशेंट अच्छा है, अभी उसका बीपी कुछ फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, बाकी सब पैरामीटर्स अच्छे, तो उस दिन जाके मैं सर्जरी कर सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड द स्टेज अप्रोच. So that was about polytrauma and the ways of management it from Dr. Shivkumar Rajmane, and we are going to hear more about it in our next continuing episode. So stay tuned with us.